Good morning, everyone. Hi, everyone. Good morning and happy Sunday to all of you joining the StudyIQ YouTube platforms. Right. So StudyIQ YouTube platform को आप लोगों को स्वागत and Sunday special आम नहीं आसी था including marathons. आज जो सेशन टा ये काली इवनिंग रो सेशन टा जोटा कि yesterday इवनिंग रे मते नबार थिला due to some जेहेतु I was out of city मुता को कवर करी पार नथली and that is why I will now cover that one. Good morning to Sonu, Afreen. राइट आफ्रीन टिके ग्रुप रे शेयर कर दियो हमर जो व्हाट्सएप ग्रुप गुडा अछि सेते टिके शेयर कर दियो सो दैट अदर पीपल विल बी अवेयर राइट टिके शेयर कर देई था चले So now we will go through the MCQ, that is more than 30 MCQ I will solve, right? And that will help you in these times. So this is exactly the crucial times that only some few odd days are left. That means I would say how much? It would be some 20 odd days. जदि हम देखियो बाकी some around 22 days वगैरह से तक हबो कि 21 days. But this is very crucial time. Good morning, Rajendra. राइट जॉइनिंग मी सो इंडियन जियोग्राफी किसी आम माने जो कहते फास्ट एंड फ्यूरियस क्वेश्चंस किसी सॉल्व करबा बेसी मु टाइम टेकिंग करिवे नहीं कारण एबे टार्गेट होचे केते आम अधिक क्वेश्चन सॉल्व करि पारुचे जदि मु गोटे क्वेश्चंस को अधिक टाइम देके सॉल्व करबी एबे सेति बेनिफिट्स हमको दबो नहीं तो इट वुड बी फास्ट एंड फ्यूरियस एंड यू हैव टू बी आल्सो सेम पेस चले तो शेयर कर दिया समस्त डिफरेंट ग्रुप्स हमर जो अछि चले फिर फास्ट क्वेश्चंस तो फास्ट क्वेश्चन रहेगा कि which of the following river does not origins from the Himalaya? इजी क्वेश्चंस देखो क्वेश्चंस बहुत इजी तो एटा समस्त कहि परिबो बट इजी बोले कि आमे ताको किंतु डिफरेंस नै कि जिबा बट द हिमालयन रिवर्स आर व्हाट मु फटाफट रिवीजन कर देबी द हिमालयन रिवर्स आर व्हाट दे आर द यंग रिवर दे आर व्हाट यंग दे विल बी लॉन्ग द हिमालयंस दे वुड बी लॉन्ग दे वुड बी व्हाट एंटीसीडेंट हेई पारे जदि आमे कहबा किछि तमरो एंटीसीडेंट हेई पारे किछि तमरो मैक्सिमम हिमालयन रिवर होची कॉन्सेक्वेंट कोन कॉन्सेक्वेंट बट केतेटा जदि आमे कहबा जो कोनसी भी रिवर जदि तमे टाइवेट रु ओरिजिन होची ताले बाय डिफॉल्ट तमे आखी बंद करि कहबे इट्स ए एंटीसीडेंट रिवर कॉन्सेक्वेंट रिवर कोन ना हिमालय फॉर्मेशन हैला परे जो सब रिवर हिमालय रु ओरिजिन होची सेमान को आमे कहबा कॉन्सेक्वेंट स्ट्रीम तेणु करी मु एठी वैल्यू ऐड कर देली फटाफट राइट देख ये क्वेश्चन रो मु जेमती वैल्यू ऐड करूची त माने वैल्यू ऐड करके जीवो जेमती मु करूची ये क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन बट मोर टार्गेट होची हिमालय को सॉल्व करबा मोर टार्गेट होची हिमालयन एंड रिवर भीतर रिलेशन को एस्टैब्लिश करबा तो हिमालयन रिवर्स आर यंग दे वुड बी लॉन्ग दे वुड बी एंटीसीडेंट दे वुड बी कॉन्सेक्वेंट जो भी रिवर हिमालय रु ओरिजिन होची आखी बंद करी कहबो कॉन्सेक्वेंट एंड मास्टर स्ट्रीम एंड ताको कोन कहबा मास्टर स्ट्रीम मास्टर स्ट्रीम आमे कहू कहू द मेन रिवर को आमे कहू मास्टर स्ट्रीम तार ट्रिब्यूटरीज को आमे मास्टर स्ट्रीम कहू नाहू जेमति महानदी इज ए मास्टर स्ट्रीम किंतु तार ट्रिब्यूटरीज आर नॉट द मास्टर स्ट्रीम राइट चलो फिर तो कॉन्सेक्वेंट मु कहली हिमालय रु कोनोसी रिवर ओरिजिन होची कॉन्सेक्वेंट कहबो टाइवेट रु कोनोसी रिवर ओरिजिन होची एंटीसीडेंट एटा होची कोन कि गध मेथड रे मन रखिबा बट तार गोटे थ्योरी होची तार गोटे फार्मूला होची बट आज ऑफ नाउ एतिकी तुमको सॉल्व हो बाकी हिमालयन रिवर्स आर दे विल फॉर्म मोर जॉज दे विल फॉर्म मोर कैटरैपिड रैपिड्स वाटरफॉल हाई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन कैपेसिटी मध्ये ता पाखरे अधिक रहिबो यंग रिवर रहिबो चलो फिर नेक्स्ट ये तो सी बुझी परियो समस्त आंसर किंतु कमे क्वेश्चन व्यतीत जो वैल्यू एडेड पॉइंट मु कहूची दैट इज वेरी इंपोर्टेंट गुड मॉर्निंग सस्मिता So, the next question, which of the following river does not origin from Himalayas? एटा में देखिले the Purbanchal hills are mainly composed of what? Fault mountain, volcanic mountain, residual mountains and the block mountains. देखो एई थ्रू सबु बेले क्वेश्चन आसुची तुम कहबो सर ए क्वेश्चन को सब बेले आसुची आपन कहउचंते ना मो कहा कथा क्वेश्चन रो ऑप्शन को देखो तुम जदि क्वेश्चन रो ऑप्शन को देखिबो ताले तुम जानि परिबो ए थ्रू क्वेश्चन आसुची कि नहीं फोल्ड माउंटेन किए लाइक हियर जदि मु फटाफट इंडिया रे ड्रॉ करबी दिस इज फोल्ट माउंटेन राइट हिमालय इज फोल्ट माउंटेन
Aravalli is old fold mountain. So this one is ताली एमाने होचंती तमर कोन फोल्ड माउंटेन ईस्टर्न घाट कथा नहीं जाओ दैट मीन्स हम ईस्टर्न घाट कथा नहीं जिबा हिमालय कथा नहीं जिबा पूर्वांचल कथा नहीं जिबा आरावली कथा नहीं जिबा ताले ताले फोल्ड माउंटेन किंतु वोल्केनिक माउंटेन्स कोठी हमकु देखा जिवो अंडमान निकोबर रे देखा जिवो आउ किछि तुमको एठी हरियाणा साइड रे देखा जिवो रेजिडुअल हिल से कोइ हिल एंड माउंटेन्स तुमको एठी देखा जिवो किछि अदर पार्ट्स रे ब्लॉक माउंटेन्स हम देखिछे जेमती तमरो बिंधिया कथा नहीं जाओ सातपुड़ा कथा नहीं जाओ वेस्टर्न घाट कथा नहीं जाओ एटा को तो बहुत थोर से पचाची ब्लॉक्स माउंटेन्स राइट बस हे गला हमको हम देखिदेले ब्लॉक माउंटेन्स मध्ये हम देखिदेले राइट हे जिवो गुड मॉर्निंग 2 नंबर तो 2 नंबर आंसर जति हम देखिबा अफरीन सोनू राजेंद्र सस्मिता एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर ए तो करेक्ट आंसर होची ए बट ध्यान से मन कर तमरो अंडमान निकोबर जोटा जदी तुमको पछरे कि अंडमान निकोबर रेंज कहार पार्ट जो अंडमान निकोबर रेंज को जति मोठी कवर करिबी राइट द अंडमान एंड निकोबर रेंज जति तुम देखिबो इंडियन मैप रे सो दिस वुड बी लाइक दिस राइट एंड हियर तो अंडमान एंड निकोबर जति आमी आंसर देखिबा दे आर सिचुएटेड हियर इन द इंडियन ओशन and they are the either you will say they are the running chain of पूर्वांचल and also 90 degree reach केते हमरो जो 90 degree reach रही तार मध्य पार्ट and that is why सबले कहबे कि they are the part of 90 degree reach चलो फिर बहुत बढ़िया आंसर and the next questions before you 3 number questions the Malwa plateau is a part of what Deccan plateau Chutnagpur plateaus or Aravalli hills or the Vindhyans plateau question number 3 देखो क्वेश्चंस इजी ने भी बट आई विल डिस्कस मोर राइट आई विल डिस्कस मोर चलो मालवा प्लेटू इज ए पार्ट ऑफ व्हाट 3 नंबर मालवा प्लेटू Malwa Plateau is a part of Deccan से कहूची Malwa is a part of Deccan छोटनागपुर Aravalli hill system Vindhyan देखो फटाफट मैप ड्रॉ कर दबो तमे मैप ड्रॉ कर देले तुम मन को जान पड़ी जीवो राइट कि व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग्स तो मैप फटाफट ड्रॉ कर देलो एंड हियर इज ये छोटनागपुर प्लेटू जो तुम छोटनागपुर प्लेटू कहूछ दिस इज छोटनागपुर प्लेटू एक होची विंध्यान प्लेटू सो दिस वुड बी विंध्यान प्लेटू तो एटा रहबो तमरो विंध्यान प्लेटू रहइबो एंड हियर इज मालवा प्लेटू and Aravalli तो एपट साइड रही जिवो that is why this would be wrong and this is the correct ताले हम कहबे it's a part of what Deccan plateau ताले it's a part of Deccan plateau तो right answer would be it's a part of Deccan plateau समीर कहूची B C एते सारा काई के आसुची आंसर would be A आंसर देछि किए सुमु right answer given by सुमु अफरीन right समीर पुनी B काई कहूची सी कहीं कहीं की ए तो हबो ना कंफ्यूज कहीं की एते हां व्हाई एते कंफ्यूज कहीं की नेक्स्ट व्हिच इज द लार्जेस्ट saline water lake in India लार्जेस्ट से कहिची दैट मींस इन टर्म्स ऑफ एरिया whether this is Sambar Silka Pulicat or Vembanad Lake आज वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आनी नहीं इजी क्वेश्चन सब आनी चाहिए ट्राई करो ट्राई इजी वन तमे को काम तमर देख पढ़िबार टेक्निक सपोज मु गोटे लेक क्वेश्चन बनैछि तो तमे बाकी सब लेक द एंडरी लेक कोन सालाइन लेक कोठी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कोन ऑक्सफोर्ड लेक्स कोन तो लेक को पूरा कंप्लीट करियर अछि 14A ओके सांबर लेक कोठी अछि देखा पुलिकाट कोठी अछि जानि से समझते आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पुलिकाट मेजॉरिटी पार्ट आंध्र प्रदेश रे आसीबो वेमनाड होछि तमर केरला रे अछि सांबर तमर होछि कोठी राजस्थान रे अछि चिल्का तमर ओडिसा रे अछि तो लार्जेस्ट saline water lake obviously it would be Sambar lake it would be what Sambar Rajasthan Aravalli but तमे के जदी का को लागबो चिलिका ना चिलिका होछि brackish water चिल्का पुलिकाट वेमनाड all are brackish water they are not saline again I repeat
this one, this one, this one, they are what? Brackish water, and this is the second largest brackish water next to Chilika. All, so Chilika is the what? I mean that means Ramsar site. This one is Ramsar site, Ramsar site. तो ये सब रामसर साइट मध्य मन रखो तो सांबर लेक इज व्हाट लार्जेस्ट ताले लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कोटा yes what would the largest fresh water ଆଉ ଟିକେ डिफिकल्ट क्वेश्चन दरकार ହେଇଥିଲା ନା କଣ ହେଇଯିବ देखो सालाइन रे एठी आंसर बी देखौची बट बी तो हबनी बी आंसर हबनी सांबर ही हबो सिलिकाटा ब्राकिस जीवो एटा आंसर करेक्ट करबो हैला करेक्ट द आंसर so this will be the answer because these three they are brachis they are what brachis these three this one this one this one they are brachis not salt then answer B habo next the northern sarkar is named historically associated with what just a minute solve karo फटाफट the northern sarkar is associated with western ghat eastern coastal plain is Indo-Gangetic and the central highland question number 5 northern sarkar is a easy pick obviously जदि coast कथा मु कहबी तमरो coastal area पाखु को आसीबा हमें when we comes to the coastal area let's say this is the coastal line of that means India the Gujarat is having the longest one right so here is Tamil Nadu Andhra Pradesh Kerala Maharashtra Karnataka Goa right Odisha so these are the me kahi pariba so that means starting from Gujarat Maharashtra Goa Karnataka Kerala Karnataka, Goa, Maharashtra, Gujarat, TN, right, Andhra Pradesh, Odisha, so and WB also. So these are the states. MT normal मन रखिबो एटा तुमको जदि पचार जीवो केतेटा स्टेट आमे कहबे इंडियन ओशन सहित बा कोस्ट बॉर्डर रे आसुची तपर वेस्ट बेंगल 1 ओडिशा 2 आंध्र प्रदेश 3 तमिलनाडु 4 पुडुचेरी यूटी 5 केरला 6 कर्नाटका गोवा दिस आर द एरिया ताले याकू जदि हम कहछे दिस इज द नॉर्दर्न सरकार आपको कहा जे एटा तमे जानछ करमंडल कोस्ट नॉर्दर्न सरकार उत्कल कोस्ट एपटे तमे समस्त जानछ मालाबार कोस्ट कोंकण कोस्ट एंड गुजरात कोस्ट ये सब को हम देखि छे प्लस हमर जो कोस्टल लाइन रहिछि तो कोस्टल लाइन रो जो लेंथ रहिछि सेटा बढ़ी जाइछि दैट इज द व्हाट कहा जाउछि कि गेटवे टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया जदि तमे आज रो पेपर पढिबो कि काली रो पेपर जदि पढिबो सेते लिखाइछि कोस्टल लाइंस इज द गेटवे फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया चलो फिर तो ये आम देखीदे द नेक्स्ट वन तो राइट आंसर के जन देइछ देखिबा बहुत बढ़िया आंसर समस्ते जाइछ कोस्टल प्लेन राइट स्पंदन आल्सो जॉइनिंग मी चलो बहुत बढ़िया आंसर कि गोटे 5 बी देइछ बी बी हाँ से तो बी ही तो करेक्ट ना 5 रो सी के देइछ सस्मिता मिश्रा सी सी काहे की इंडो गैंगेटिक प्लेन केमती हेबो इट वुड बी व्हाट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बाकी मो ना सब कही को कोस्ट ना कौन करमंडल कोस्ट नॉर्दर्न सरकार उत्कल कोस्ट मालाबार कोस्ट कोंकण कोस्ट that is Gujarat coast and the Gujarat is having the highest that means what I said the longest coastal line of India and the coastal length of India also increased to 11,000 something from the 7,500 earlier by using what remote sensing satellites now comes to question number 6 the monsoon burst is associated with what the sudden onset of the heavy rainfalls in the coastal areas the retreat of monsoon the winter rainfalls in Tamil Nadu and the pre-monsoon shower. And the last time I solved questions from the onset of monsoons and recent theories and the studies says that
The monsoon onset pattern is been changing from the north, I would say southwestern part of India to the northeastern part of India. Why? Spandan coach, finally I was able to join the live class. I was watching recorded otherwise. Why? କାହିଁକି ତମକୁ ତ ଦିଆଉଛି ନା ରେକର୍ଡ ଲିଙ୍କ ତ ଦିଆଯାଉଛି. Yes, 6 number is a easy one. But see, monsoon ro ever so gote latest development ହେଇଥିଲେ. Why Satru is not coming, right? Okay. Satru, okay, joining. You have joined also. Okay. Then why did you was not able to connect? Spandan, what went wrong with you? Why did you were not able to connect the live class? Yes. So Rajkumar is saying 6 number. Yes, Asmita is saying pattern has changed to the northeastern. Sanu is there. Good morning, Satru. Samir is saying A. Yes, it's a sudden. The monsoon ro keteta theory फटाफट मु कहि दउची value addition part को आस. Now comes to the value addition part. जदियो easy question but मु value addition करी करी जीवी सब topic रे. Now monsoon रो keteta theory देखो. First होची ITCZ, or we call it air mass theory. We call it what? Air mass theory. This is, we call it what? Air mass theory. Given by whom? Flown. Given by Flown. Monsoon ro theory keteta mu kouchi suno. Then asibo Halley theory. Then asibo Halley theory. Halley. Halley, Sir Edmund Halley. Sir Edmund Halley thermal theory. This one is what? Thermal theory. Then P. Quotationum theory. P. Quotationum theory, the role of Tibet. The role of what? Tibet. So there is P. Quotationum theory. There is Flown theory for the air mass. There is what? Halley, Edmund Halley for the thermal theory. And apart from that, Monix as well. There is also Monix in 1970s. In what? 1974, Monix. So these are the certain theories that associated with the monsoon as well. Next. Which state receives rainfalls from the both southwest and northeast monsoon? Okay, done, great. Which state receives rainfall from the both southwest and northeast monsoon? Kerala, Odisha, Tamil Nadu, Andhra Pradesh. Next questions. See, this kind of questions are the easy questions, right? Those who have gone through the books. Otherwise, you have done your self study or you have learned from somewhere else. It would be what? Easy to you. So this would be northeast monsoon, and from here there would be southwest monsoon. So both the monsoons are like this, southwest monsoon, and this one is your northeast monsoon, right? Both the monsoons are comes, and here would be the meeting areas. So these are the what? Meeting areas. So that is why, so this portion, this portion, this portion, this portion, they would not be part of that. They would not be part of. Now, whether it's a Kerala, Odisha, Tamil Nadu, Andhra Pradesh. 7. Sasmita Misra 3 is saying Tamil Nadu, and Sumu is saying C. Spandan is going for Tamil Nadu. Everybody is going for the C. So C is the trending. Okay. Why C Tamil Nadu? Because Tamil Nadu also receives the southwest monsoons, but that would be below 100. I would say what? cm, below 100 cm, not mm, cm. But when it comes to this one, that will receive pretty good. Okay. Chalo fair. So C, Tamil Nadu is the correct answer. But आउ गोटे जिनस मु कहि दिए सेथरे तमे आंध्र प्रदेश को भी ऐड करि परिबो. You can also add मतलब कर्नाटका रो केछि पार्ट जो हमर नॉर्थ ईस्ट मानसून आसी थाए एबे जेतो मिड ऑफ अक्टोबर स्टार्ट हबो. नॉर्थ ईस्ट मानसून ऑनसेट्स मिड्स ऑफ अक्टोबर टू नै कि अप टू हमें कहबा कोन थाए तमरो जनवरी, मिड जनवरी चाहिँ, और लेट्स से लास्ट ऑफ फेब्रुअरी चाहिँ जो तमरो नॉर्थ ईस्ट मानसून हे थाए. तो से नॉर्थ ईस्ट मानसून रे कोन हुए कि हमकु तमिलनाडु, southern part of Andhra Pradesh, Puducherry and Kerala एमने रिसीव करंती रेनफॉल सेमती पचारि पारंती. Okay, next.
The highest annual rainfall in India is cloudburst कोठी हेइथे बा occurs in where? तुमको एते इजी क्वेश्चन तो आसीबोनी, आसीबो कि आसीबोनी काहे की हुए मु कहिबी एठी काहे की हुए मु क्वेश्चन चेंज कर देबी. आई विल चेंज द क्वेश्चंस देन व्हाई. लेट आई विल चेंज द क्वेश्चन सेम देबनी. आई विल चेंज द क्वेश्चन को मु चेंज करबी. 1 मिनिट. एठी से कहछि annual rainfall आमु एठी लिखिथिबी व्हाई. एठी लिखिबी so the highest annual rainfall in India occurs पुआसिराम समस्ते जानिछ why मु कहबी why काहे की यार आंसर दियो. एटा तो समस्ते जानिछंत मौसिराम चेरापूजी की जाननी ताकू छाड़ ना why आर आंसर कोन हबो काहे की एठी अधिक होउची why not other place of India. Anyone? yes ट्राई करो समझते. कौन है गला ट्राई करो. because of the geographical location and shape. What? Because of the physiographical shape. The shape of physiographical shape ताकू कौन कहबो the shape केमिति हि थाय देखो ये कोठी होची all are in मेघालय or all are in मेघालय गारो खासी जॉइंदिया. so this mountain here the mountains are of what? so they are the shape of the mountains like this. तो एमती जेतले shape होची when the monsoon airs enters to this region because of this funnel shape. because of this what? funnel shape. The shape is what? funnel shape. so because of the funnel shape the air mass here what? get traps. तो सेठी कोन होइते ट्रैप हो जाय. because of the trapification of the air mass in this region the air mass टा कोन के आ इठु कोड जाई पारे नहीं and it does not escape from this region. so that is why for the long period of times the heavy rainfall take place. so that would be what? shape. geographical आमे कहबा topography or you may say topographical shape. the shape, the design of landform in that particular region. so that is naturally happens here. The next questions. The winter rainfalls in the northwestern plains of India is mainly due to what? The winter rainfall in the northwestern plain of India is mainly due to what? Well, because of easterly waves, because of tropical cyclone, because of western disturbance and the jet stream. In India, or let's say मु एठू बहुत गुडा क्वेश्चन सॉल्व करेबी राइट. मु खाली क्वेश्चन सॉल्व करेबी बहुत गुडा एथरू सॉल्व भी करेकी देखेबी. एथरू आउ कोन कोन हे परिबो. हां फटाफट ट्राई करो एवरीवन. गो फॉर द 9-1. गो फॉर 9-1. 8 रो तो आप कहि परलनी राइट. कम्स टू 9-1. This is India, your beloved nations and mine as well. Little bit of strains there on my knee, but despite the fact I have to take the class, right? Chalo fir. Come on fast everyone. 9 number. Words went wrong. Okay. 9C. अच्छा सेटा गारू खासी जानते. अच्छा बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल. अच्छा सेटा देइथिला मु ताले कमेंट मोर अपडेट हो नथला. अच्छा ओके ठीक अछि. ग्रेट. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत बढ़िया आंसर देछ तमने. दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. ना ए मु फटाफट आप एक्सप्लेन कर दिए कि व्हाट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. यदि के न जानछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोन हेते देख ना तो ईस्टर्ली तमे देखो इंडिया रे केतेटा जेट स्ट्रीम थाए. इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 जेट स्ट्रीम. वन इज कमिंग फ्रॉम हियर एंड वन इज कमिंग फ्रॉम हियर. सो that is easterly jet stream. आपको हमें कौन को easterly and this one is westerly.
this one is what westerly. So there are two easterly jet stream गोटे अछि आ गोटे हमें western disturbance जहाँ को हमें कहते soft tropical jet stream. दीटा jet stream इंडिया को इन्फ्लुएंस करे एंड मॉनसून को इंपैक्ट करे थाए. तेणु ये तुम soft tropical jet stream जोटा रही ये इंडिया को कौन करे जो हमारा टेम्परेट साइक्लोन ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर व्हाट दे आर बेसिकली टेम्परेट साइक्लोन दैट ओरिजिन्स इन कास्पियन सी in what Mediterranean Sea and in what Black Sea. तो सेमानकर जो इन्फ्लुएंस था the waves of that cyclones that reaches out through the subtropical jet stream to this portion of India and that causes rainfalls in the plain area and snowfalls in the higher reaches of Himalayas and that is why तुमको ये जो जो snowfall Manali ये सब region रहुची because of this western disturbance. Again that is because of the western disturbance and this western disturbance sometimes a बहुत pleasant weather नहीं किया से तादरा tourism boost होची but ए वर्ष भले flood भी करी पारे. This year the what northwestern part of India what saw the devastation of flood especially in Punjab side अभी तमर है पारे. So this is how the answer. So everybody right बहुत बढ़िया आंसर देइछ तम मने. चलो फिर जीवन next questions. Question number 10. The mango showers are most common in which regions? So this is the questions from the locals wind and the other local winds in India. फटाफट मु लिखि देबी तम मैंने आंसर देला भितरे other local winds रहउची तमरो जेमति हमें कहूचे काला बैसाखी कहूचे काला बैसाखी we are talking about cherry blossom, we do talk about cherry blossom, we do talk about Loo, right, Loo as well. Yes, Afrin is saying 10 number B, Prakash is saying 10 number B, so no, everybody is going for the B. Sasmita, Afrin, Sasmita, Misra also western disturbance. Okay, both would. Yes, that means we are going for what? This one is the correct one. This one is also correct. But apart from that, Loo in Ganges plain, this would be in what? Ganges plain. This would be in your Ganges plain. In the what? Ganges plain. And cherry blossom is a part of your coast. This would be your what? Malabar coast. And sorry, it's a what? I mean, Karnataka coastal dekha jay. And काला बैसाखी जानछो ओडिशा आसाम वेस्ट बंगाल बिहार काला बैसाखी देखा जाई था. चेरी ब्लूजम इन आसाम दिस वुड बी अगेन इन आसाम. तो आसाम रे तुमको दुईटा देखा जो काला बैसाखी एटा. लू कोठी देखा जिवो राजस्थान हरियाणा उत्तर प्रदेश ए पूरा जो हमर गैंगेटिक प्लेन अछि एठी तुमको लू देखा जिवो. तो दीज आर द लोकल विंड्स ऑफ इंडिया. खत्म. नेक्स्ट टाइम जिवा सॉरी रेगुलर सॉइल एते जानछो सब इजी क्वेश्चंस 8 इजी क्वेश्चन अब किसी दरकार नहीं बट ए क्वेश्चन को हम चेंज कर दवा. एते इजी क्वेश्चन काई देबी चेंज कर दवा. मते को ये जो रेगुलर सॉइल अछि राइट कॉटन एठी काहे की थाए एते देखो आंसर तो समस्त जानिछ तण मु आंसर को जिबिनी मु आंसर देखै भी देउछि. आंसर तो समस्त जानिछ राइट बट मोर क्वेश्चन हैला माय क्वेश्चन व्हाई नाउ वेदर कॉटन कैन बी ग्रोन ओनली इन द रेगुलर सॉइल. कॉटन आउ को सॉइल रे ही परिबो मोते मो कहे था ये जो कॉटन आउ को सॉइल रही परिबो अपार्ट फ्रॉम दिस ब्लैक सॉइल. ये जो आमी जदी कहबा साधारणतः हमर ब्लैक सॉइल हेई थाए ब्लैक सॉइल को छाड़ी देले अपार्ट फ्रॉम दिस आउ को सॉइल रही परिबो. लू देखो लू जोटा तमे सनु प्रसाद कहउचो लू खाली राजस्थान रे हुएनी that also cause it would be what हरियाणा दिल्ली वेस्टर्न यूपी इस पूरा गैंगेटिक प्लेन को लू मध्ये अफेक्ट करी थाए. Reach clay content. Afrin is saying reach clay content. Satru is saying the water retention capacity. Lucky is saying A. ना मु कहली कि रेगुलर सॉइल ठीक अछि that is suitable for the what cotton but आउ को सॉइल हे परिबो. Black soil is having what high retention so this would be what high retention. This would be what sticky one. This would be a sticky soil. This would be it's a what muddy one. This would be muddy one ये जो black soil टा but ये तमरा alluvial रे भी तो ही परिबो. I can grow in alluvial soil. It can be in loamy soil. It can be in red soil. Cotton को चाहिले grow करी परिबी but quality of cotton will come out in this soil. But the quality of cotton will be here. But ता अर्थात नुहे कि ये सब soil रे ही परिबो नहीं right सेथरे भी ही परिबो. Correct.
अच्छा ओडिसा रे कॉटन कोठी अधिक चाष होई थाए ओडिसा रे कॉटन अधिक कोठी होई थाए एनीवन व्हिच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिसा प्रोड्यूस हाईएस्ट कॉटन एंड व्हाई व्हिच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिसा प्रोड्यूस हाईएस्ट कॉटन्स एंड व्हाई एनीवन चलो 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 देखिए ट्राई करो ओडिसा रे कोठी कोठी होता है केबीके रीजन दैट वुड बी व्हाट केबीके रीजन ऑफ ओडिसा एंड स्पेशली योर कलाहांडी स्पेशली व्हाट कलाहांडी अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल हैव कलाहांडी बलांगीर राइट दैट वुड बी कंधमाल रीजन आल्सो बट तमरो रायगड़ा रे अधिक होता है दैट मीन्स हमें जदि कहबा रायगड़ा गजपति राइट एठी मध्ये होता है गंजाम एठी भी होता है गंजाम रे मध्ये होता है गंजाम गजपति रायगड़ा ये सब रीजन रे मध्ये होता है yes कलाहांडी is largest ए रीजन रे मध्ये तमरो कहाई था कोरापुट अपार्ट फ्रॉम दैट तमे कोरापुट रे मध्ये ही था कोरापुट बलांगीर रीजन रे मध्ये ही था बट सबठो अधिक ए रीजन रे बिकॉज ऑफ द सॉइल अच्छा ये जो रेगुलर सॉइल जाको हम कुछ आंध्र प्रदेश रे कहा जाए कॉटन सॉइल कोठी कहा जाए महाराष्ट्र रे कहा जाए ये सॉइल रो हमें देखिए थिकनेस अधिक ये कोठु फॉर्मेशन है हमें कहितले वी डिस्कस इट अर्लियर that is this soil is regular soil that the black soil is formed from of what because the weathering erosion of what that to be the basaltic rock that basaltic plateau now comes to the 12 which soil is called as the self plowing self plowing soil again this would be the same one yes come on questions number 12 Prakash is going for B. It's a black soil again. It's a what? Black soil again. Rajkumar is being Spandan. Everybody is going for the B, B, B. Sasmita also going for the B. Yes, right answer is B. Sure, for next. आज देखो easy questions नहीं छी, technical questions कम नहीं छी. But technical question आसीबो marathon रे. Wait for that. 10 टा रु 12 टा जेतल मु नेबी असरी बा 12 रु 2 12 रु 2 जेतल नेबी सेतल तमर आसीबो डिफिकल्ट क्वेश्चन आसीबो आज 12 टा रु 2 टा अछि मोर मैराथन सेशन जेटा धरी सर नेबे 10 टा रु 12 टा मु ने 12 टा रु 2 टा सेई जो सेशन रहबो तमरो दैट इट वुड बी डिफिकल्ट क्वेश्चन तमे मिक्स्ड अप्रोच रे जीवा चलो द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द तराई रीजन इज अ गुड वन Yes, question number 13. 13 number D. Everybody is through Afreen, Sasmita both, Sasmita Misra and Sasmita. Sagar also going for D. Sanu, Sasmita, Swampy. अच्छा देखो तारे कौन कुछ ऑप्शन wet grassland and swampy forest, tropical rainforest, moist deciduous. चलो बहुत बढ़िया ऑब्वियसली हम जानते तराई रीजन अच्छा मु जदी तुमको पचारू के व्हिच ऑफ द स्टेट डज नॉट हैव तराई रीजन कोन हबो मु देबी तुमको गोटे ऑप्शन दउची तराई रीजन अच्छा मु जदी तुमको आ गोटे ऑप्शन कहबी कि तराई रीजन केते बेले आसे मते गोटे एबे गोटे मु क्वेश्चन चेंज कर देबी एटा तो गला तमरो
तराई रे फीचर कौन ही थे तराई रे रॉकी सॉइल थे it will have rocky soil, it will have uh, old alluvial soil, it will be new alluvial soil. Where I am talking about Tarai, I am talking about this zone, I am talking about this zone, or it will have swamp or swampy one or swampy one. Tarai is a stretch of Tarai जदि आम देखा almost 2400 किलोमीटर of Tarai belt starting from Assam to जदि आम कहबा Assam, Bihar, UP, West Bengals, then you consider Punjab, ये पूरा टा Tarai region सेमती जाइछि, the foothills of Himalaya. This is unconsolidated, and the answer would be it's not rocky soil. It's not rocky. Rocky is Bhabar. Rocky is what? Bhabar. It's not old alluvials. It's not new alluvials. It should be swampy one. So answer would be it's a swampy one. It's a what? Swampy one. Tarai re ko national park, the famous national park of Tarai region. Anyone? The famous national park of Tarai region. No. Himachal Pradesh don't have. Himachal don't have Tarai region. Sikkim don't have Tarai region, right? Himachal, Sikkim, they don't have. तराईटा कोठी फुटिल देखा जाओ ना बट हिमालय तो नॉट हिमालय ता तो फुटिल नहीं ना पंजाब रे तुमको फुटिल देखा जाओ हिमालय हिमाचल रे केमती फुटिल देखा जाओ को यस दुधवा नेशनल पार्क राइट आंसर इज अफरीन दुधवा नेशनल पार्क यस यूपी दुधवा नेशनल पार्क यस द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व डज नॉट इंक्लूड्स व्हाट D is here. D is here visible. This one. Try करो try करो. बांदीपुर कोठी अछि कर्नाटक 14 D. Now everybody starts to follow the D. Bandipur National Park famous for what? Tiger. The Silent Valley, Nilgiri, Venad also, tiger also there. Venad, Muthumalai Wildlife Sanctuary, and it's a what? Bandipur in Karnataka, the famous for the tigers. Karnataka also one of the having highest tiger population of India next to Madhya Pradesh. The Madhya Pradesh is having the highest tiger populations. Then it will have side आपका Karnataka, then Uttarakhand. They are the top three, right? This is Silent Valley. So answer is what? Silent Valley. National parks that comes under Nilgiri Biosphere Reserve. तो सब गुड़ा आसूची बांदीपुर भी आसूची ठीक है मैप देखिया पड़िबो नागरहोल हेइथिले हेइ थांता पथे नागरहोल भी तो से भी तो आसूची बांदीपुर भी आसूची बट आउटस्कॉट रे आसूची हां सेत पे हमें बांदीपुर को नहीं परिबा चलिबो किछ नै यू कैन गो फॉर द बांदीपुर बिकॉज़ बांदीपुर इज आउटस्कॉट रे रहउची तो तार बहुत कम एरिया आसूची गो फॉर दैट
राइट गो फॉर दैट सेटा ही आउ किछ हे परबो ओके नेक्स्ट ओनली कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज व्हाट कोल्ड डेजर्ट स्पीति वैली लद्दाख नुब्रा एंड किन्नौर yes cold desert biosphere reserve and this is also one of the largest national parks of India also here yes try करो बाकी समझते ठीक है ध्यान से करता हो Prakash is going for yes Afrin is going for good B खाली शत्रु B देइछ ओके त देइन आंसर एक मिनट हाँ आसला हेमिस आसला कमेंट गुडा ओके लद्दाख बहुत जन लद्दाख देइछ ना कि B and Sasmita going for the Hemis National Parks बहुत बढ़िया that is the largest huh Hemis National Park largest national parks okay so it would be answer tal kon about B so it would be Ladakh it would be the cold desert biosphere reserve Ladakh and the Hemis National Park jota tum jancho that is the largest national park of India okay Nubra Valley jancho kouthi ochi again in the Ladakh region re Spiti Valley Lahul and Spiti in where Himachal Pradesh next which of the following rivers forms a rift valley ये तो जानी चाहिए आउ कौन इजी वन रिफ्ट बाकी समस्ते जानते ये तो सब जीव आउ कौन है ना स्नो लेपर्ड्स हाँ स्नो लेपर्ड्स देखा जो तुमको देन देयर वुड बी आल्सो डबल हम्प वाला तुमको कैमेल देखा जीवो देयर वुड बी लेपर्ड्स देखा जीवो नर्मदा सो आंसर वुड बी व्हाट नर्मदा बाकी देखो नर्मदा हे गला ताप्ती हे गला दामोदर हे गला these are the rivers are flowing through the rift valley but महानदी को भी कहीं कहती कि also flowing through the rift valley but महानदी और नर्मदा जितने गोटे पेज रे अछि ना then I have to pick the Narmada I have to pick the what Narmada the largest east flowing rivers of the peninsula largest east flowing 17 the largest east flowing in terms of volume of water in terms of what जेतर को आज लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉन्गेस्ट लेंथ बस Satru is going for B बाकी देखिबा both the Sasmitas are there Prakash is Godavari Sasmita is B Sumu is going for B Sasmita Godavari lekhuchi Afrin is Godavari Prakash is B okay next अगला ओके चलो फिर the next Terhi dam एवं न्यूज रे थिला is built on which river Terhi is built on which river चलो चलो फटाफट भागीरथी ए सनु कोची ए लकी कोची ए सुमु इज गोइंग फॉर ए अफरीन इज गोइंग फॉर ए एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर ए बहुत बढ़िया भागीरथी हम जानते हैं तेरी इज वन हाईएस्ट
डैम ऑफ इंडिया ऑल्सो द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया तेरी ध्यान से सुनिबो तेरी भागीरथी ऊपर अछि द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी राइट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रे मध्य नंबर 1 कोठी अछि उत्तराखंड इट्स ए ग्रेविटी डैम आकु आउ कोन कहबो इट्स ए ग्रेविटी डैम इट्स ए प्रथम कथा इट्स ए ग्रेविटी डैम इट्स इन भागीरथी इट्स इन उत्तराखंड it's the largest dam in India in terms of the production of hydroelectricity. चलो फिर next. Which river forms the largest delta in India? तो जानते समझते next forms the largest delta in India. महानदी गोदावरी गंगा ब्रह्मपुत्र and कृष्णा. पुणी मु पचारि why? ग्रेविटी डैम कहले जो डैम निज वेट रे बसी रहे जो डैम निज वेट रे ही बसी रहे ताको कह जाय ग्रेविटी डैम ग्रेविटी डैम्स आर जनरली ह्यूज डैम लाइक द हीराकुद डैम इज ए ग्रेविटी डैम गोदावरी जहाँ जेते डैम देखिछो मैक्सिमम डैम्स आर द ग्रेविटी डैम इन इंडिया 19C देन माल्डा गैप कोठी अछि माल्डा गैप सेपरेट्स which two hill in India सुंदरबन डेल्टा यस ये क्वेश्चंस मध्य बहुत इजी क्वेश्चन बहुत थर कहि मु तकू दिस इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ इंडिया दिस इज आल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा दिस इज आल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा ओके बाकी मते को कि माल्डा गैप को दीटा हिल को सेपरेट करूची माल्डा गैप देखि आसुची ना दीटा रिवर एठी गोटे अछि एठी गोटे अछि एंड your Ganga is coming like this Brahmaputra is coming like this they are meeting एठी गोटे हिल टा अछि एठी गोटे हिल टा अछि this is Garo and this side is what Chotnagpur plateau and Rajmahal now this is Rajmahal hill this side is what Rajmahal hill this side is Garo hill right Garo खासी जानतिया तो ये दीटा भीतर दे जाउछि ताले के राजमहल हिल एंड गारो हिल दीटा मन रखो एपटे गंगा आसुची तो एटा होची ए जो गैप टा दिस इज द माल्टा गैप चलो नेक्स्ट लोकतक लेक समझते जानिछ फटाफट तापरे डिस्कस करबा लोकतक लेक इज ए मु एबे क्वेश्चन चेंज कर दोची सुनो एडी फुमडी कोन ये फुमडी कोन लोकतक लेक इज फेमस फॉर द फ्लोटिंग फुमडीज आर व्हाट फुमडीज कोन फुमडीज आर व्हाट ग्रासलैंड दे आर बेसिकली व्हाट ग्रासलैंड they are nothing they are the grassland the fumdis are what grass they are the what sorry the grasses floating grasses and एठी गोटे deer species थाए ताको हमें कोन कहू सांगाई ताको हमें कोन कहू सांगाई राइट अच्छा आउ एटा को टाइप रो लेक whether this is हम कहबा क्रेटार लेक और कॉल्डेरा लेक को टाइप रो लेक मणिपुर देखा जाए इट्स मणिपुर एते त मन जानचो मणिपुर रे देखा जाए मु कहितली कि फास्ट फ्लोटिंग प्राइमरी स्कूल एथरे कोन अछि तमरो प्राइमरी स्कूल्स मध्ये अछि हेल्थ सेंटर्स मध्ये रहिछि and there is health centers अच्छा मोते खाली एति हो कि ये को पकड़ लेक whether this is क्रेटार लेक और कल्डेरा लेक इसे क्रेटार और कल्डेरा इसे कल्डेरा और क्रेटार which one कौन है कही पारबनी हाउ इट्स ए काल्डेरा लेक मन रखियो इट्स ए काल्डेरा लेक इट्स ए व्हाट काल्डेरा लेक मन रखियो कथा हैला कौन कहली इट्स ए काल्डेरा लेक देन एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक इट्स ए काल्डेरा
এটা মনে রাখো ওয়ান অফ द লার্জেস্ট কালডেরা তো যদি তোমাকে পচারে ইটস এ কালডেরা লার্জেস্ট কালডেরা লেক দেন अगेन তুমি কইবো ইটস এ লেক মণিপুর কিছু কিছু থিওরিজ কহନ୍ତି इट्स ए काल्डेरा इट्स ए काल्डेरा लेक चलो नेक्स्ट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आइसेस इन इंडिया समझते जानी चाहो 21 द लार्जेस्ट स्पाइसेस कोठी अधिक होता है ओबियसली केरला रे तो हबो कोठी हबो केरला ही हबो तमे चाहे से पोर्तुगीज कथा नहीं भास्कोडा गामा कथा नहीं 60% मुनाफा पाइथिले यूरोपियन मार्केट रे बिकी की नेक्स्ट द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन वेयर पंजाब हरियाणा यूपी महाराष्ट्र गुजरात बिहार आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वेयर गुड मॉर्निंग लोपामुद्रा देन मु पचारि वाई तापर पचारि जे एटा तो गला एटा तो समस्या जानछ देन पचारि वाई काहे की एठी हैला एटा समस्या जानि छै ना काहे की एटा देन वाई क्वेश्चन मोर आंसर दि हबे वाई एठी काहे की हेतला वाई दिस रीजन वाज पिक्ड काहे की वाई दिस रीजन वाज पिक्ड वाई पिक्ड and who was the father MS Swaminathan the father of green revolution of India yes this is right answer is Punjab Haryana then why my question is why and the father is what MS Swaminathan so setara amar thila 50 million metric tons but now we are producing 330 plus million metric tons of food grain so this is the changes after the green revolution before the green revolution we were producing only merely 50 million metric tons of food grain now India is producing 330 million metric ton of food grain so because of dwarf region spandan coaches are because of dwarf region fertile soils MS Swaminathan but mo answer kahi pauni mo answer jota mu pacharchi miluni ना मो आंसर मिललानी तम देई पालन की तो आंसर इज व्हाट बिकॉज ऑफ इरिगेशन आंसर इज व्हाट बिकॉज ऑफ irrigation system there was large irrigation because of Vakra Nangal because of Terhi ये सब जो डैम ऑलरेडी थिला so that is why there was irrigation system and fertile soil that all cumulative and the most important answer would be irrigation what good morning Vijay Lakshmi it's a what irrigation is the answer what irrigation is the answer okay so now 10 टा 12 टा तमरो सार आसी जिवे मैराथन स्टार्ट हबो आई विल एंड हियर ओके now thank you everyone for joining the session now 10 टा 12 टा सार मैराथन नेबे के जटाधरी सार then मु 12 टा 2 टा मैराथन नेबी मु so till then thank you everyone and keep watching StudyIQ